Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 17th July and we are here with the Hindu analysis of 17th July. Okay, so aaj Monday hai, today is Monday and here we are here. So if I am audible, just write in the comments, yes sir you're audible. अगर मेरी आवाज आ रही है आप एक बार लिख दो, yes sir you're audible, so that we can move on. So government set up a new panel to review all NSO data. NSO means National Statistical Office, right? National Statistical Office. I hope you are aware of it. I have taught these things in the paid classes in economics section, NSO and all. So this will be discussing it. Yes, good morning everyone. Good morning guys. Okay, so इसमें article है that it replaces a committee which examined economic data set only. Move follows sharp critiques of India's statistical machinery. New panel to advise government on surveys, identify and plug data gaps. So basically NSO, that is National Statistical Office, basically calculates different statistics, right? It's like for example GDP estimation and different datas and all other surveys and all. These are being conducted. Okay, yes, National Statistical Office, NSO it says. Now can you please tell me NSO comes under which ministry? I have taught in the paid classes in economics part 2 है ना, ये सब चीज part 1 part 2 में जब मैंने पढ़ाया, there are 2 parts, economics part 1 and economics part 2. So in these things I have taught it. NSO, National Statistical Office, comes under which of the following ministry? Your options are Ministry of Finance, Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Foreign Affairs. Your time starts now. बताइए NSO कौन से ministry के अंडर में आता है? And these are your options. Look, I have given you some sort of hint also. First of all, I have taught this in the paid classes. So if you are my paid batch student, you can answer it. It comes under MOSPI. मैंने बताया था कि GDP estimation is done by NSO, which comes under MOSPI, that is Ministry of Statistics and Program Implementation. Yes, so B is the right answer to this question. Yes, Yash Gupta, जब आपकी batch होगी, whenever the classes are actually assigned, so I will be teaching in your batch also. ठीक है? Okay. So the right answer is option B, MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation is the right answer. देखो मैंने कुछ आपको tricks भी बताया है. When the keywords in the question matches with the keyword in the option. So here is the keyword and here is the keyword. Both are actually matching. So probability of this option to be correct is very high. I'm not saying that 100% time it works, but yes, in 70-80% cases, this type of logic works in the exam. So B is the right answer. यस यश गुप्ता आपको पढ़ाया जाएगा, नथिंग टू वरी, है ना. यस, बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. गौरी, मान्या, चावला, प्रिया, कार्तिक, धनंजय, तनुष्का, कार्तिक, आर्यन, you all are right. B is the right answer to this question. Okay, similar question was asked in CLAT 2022 last year. So can you please tell me, answer this question? ये previous year question है. Why I'm showing this previous year question? Because from the same logic, this question can also be very easily answered. ठीक है, आप आंसर करो, I'm waiting for it. और एक और होमवर्क है और एक और क्वेश्चन है. कैन यू प्लीज टेल मी, एनएसओ जो है, इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर ऑफ 2 वेरी फेमस ऑर्गेनाइजेशन. X plus Y led to the formation of NSO. So what are X and what is Y? I have taught in the paid classes this also. Yes, अगर आप देखो कि मैंने बताया था ऑन जनवरी, अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप बहुत हद तक पहुंच सकते हो. नो वन रीड सो मच इन डिटेल. इतना अमेंडमेंट रूल्स कौन पढ़ता है, लेकिन तो भी आपको आंसर कर देते आराम से. कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब देखो इस पूरे लाइन में सबसे क्लोजेस्ट स्टेटमेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आ रहा है कि नहीं, देखो तो. यस, एंड आई हैव टोल्ड यू दिस टाइप ऑफ लॉजिक वर्क्स 70-80% टाइम. सो कॉर्पोरेट यहाँ है, कॉर्पोरेट यहाँ है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. यस, रश्मिकांत, सानिया, यश, गौरी, तनुष्का, यस यू ऑल आर राइट. सो डी इज द राइट आंसर. ऑफ कोर्स नाम जो होता है उसी के काम को रिफ्लेक्ट करता है. यस, so the name of the ministry reflects the name, reflects its job, है ना. So that is why the probability is very high that option D would be correct and D was the right answer. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, because generally any of your competitor might not have read this. ये इतना रूल्स हो सकता है सबको नहीं पता हो, लेकिन तो भी लोग आंसर पर सही पहुंच जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से. ओके
Yes, Rashmikant, very good. Gauri, yes, you all are right. Actually, NSO was formed as a result of two organizations, CSO and NSSO. Yes, very good. It led to the establishment of NSO. Yes, good. ये आपको पता होना चाहिए 2019 में अभी जो स्टैंडिंग कमिटी निकाला, स्टैंडिंग कमिटी on statistics has a broader mandate to review framework and result all NSO surveys, whatever the NSO data has come. Okay. The panel replaces standing committee on economic statistics set up in 2019 after finding from last round of etc. where expenditure employment was junk due to data quality issues. So some of the reports which came were rejected because of data quality issues. मतलब ये है कि शायद उतनी अच्छी quality का data ना हो, something like that. So they are planning to have an overhaul of that. So just have an idea about it, है ना? So that is what is being discussed about. Same thing यहाँ लिखा हो, है ना? So in order to issue, in an order issued last Thursday, the Statistics Ministry said that Statistics Ministry वही है, MOSP, ठीक है, which are marked and all. इसी को आप पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना? Conducted under the aegis of NSO and all. Pranab Sen, former chairman of National Statistical Commission, has been named the chairman. So Mr. Pranab Sen, the former chairman of NSC, National Statistical Commission, has been named the new chair of the new chairman of the panel. ठीक है, so just have an idea about that and all. Okay, तो यही NSO का काम है, आप इसको पढ़ सकते हो. इंडस्ट्री ऑफ IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकालती है, GDP एस्टिमेशन निकालती है ना? These are the different statistical information NSO is responsible for. And it actually NSSO and CSO got merged in May on 23rd May 2019 and led to the establishment of what we call it as NSO, National Statistical Office. ये सब बेसिक फैक्ट्स है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, नाउ सेकंड हाफ में एक आर्टिकल था, पैनल वांट्स कूनो चीता टू अंडरगो मेडिकल रिव्यू. सो कैन यू प्लीज टेल मी कि कूनो नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में? Medical review will investigate if the radio callers on the cheetahs are indirectly abetting infection and all. अब देखो हुआ क्या है, first of all let me give you a background. I hope last year September में and this year in January it was in the news that we brought cheetahs from Namibia and South Africa, right? कुछ cheetahs Namibia से लाए गए थे and कुछ cheetahs South Africa से लाए गए थे, brought to Kuno National Park, and this you will find in the state of Madhya Pradesh. Yes, Zoya, Priya, Dhananjay, Sani, you all are right. हाँ, मध्य प्रदेश में यश गुप्ता, नितिका, तो ये मध्य प्रदेश है. दिस इज द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है. और यहाँ पे कूनो नेशनल पार्क है, आप देख सकते हो नॉर्थ में. एंड हियर एक्चुअली चीतास वे आर ब्रॉट फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका. But in recent days, we have seen some deaths actually. Because two more cheetahs have died in the Kuno National Park. The recent one actually is the Surya is the name of the cheetah who died, and they got infected with maggots. The larvae of the maggots was also found in the radio collar in this fatality infected animal and all. Okay, तो maggots क्या होता है? Maggots होता है इस तरह का कीड़ा टाइप का होता है, something like that. It's a larva of a fly. ठीक है, छोटा छोटा कीड़ा आप समझ लो, like that. So it actually were found on his body, perhaps the reason for their deaths and all. तो इसी को अब जांच किया जाएगा कि if there is it has link with these infections and all or not. So that is what it was in the news. अब जो कुछ चीजें न्यूज में, let's say for example, Project Tiger completed. I hope you are aware, 1973 में था, so it completed 50 years. So there can be question from Project Tiger and all. You should be knowing it. Okay. Yes. Okay. Before moving on, guys, this is a CLAT 2024 comprehensive course. We are running a crash course as well. And the exam is in December. Hardly 5-6 months is left. You can go for this course. 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session is there. If you have any question, call on this number 9538895678 पे call कर सकते हो. And if you want to have a 3-day free trial, वो भी आप देख सकते हो. The link is given in the description. Or you can download the app, go to CLAT section and get the 3-day free trial also of the paid course. ठीक है. अच्छा, one more announcement today. This is a free class, ये वाला जो होने जा रहा है. Today at 6 PM on the app. So download our app, go to CLAT section, and today at 6 PM we'll be having the 10th part of revision of the Hindu newspaper question answer, है ना? तो The Hindu newspaper एक question answer उसका revision होगा, ठीक है, at 6 PM और today, ठीक है. So please do join us. इसमें करना क्या है, डाउनलोड करना है, go to app, go to CLAT section,
अब देखो नीचे में यहाँ लिखा हुआ है ना, here it is written view all लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो आप जो ACE CLAT 2024 सेक्शन में view all इस पे क्लिक करना है। When you click it, you will get it here. तो ये recent वाला टैब खुलेगा, इसमें जाना इधर upcoming वाला में। Here you will have to click here. Click on upcoming and you will get this video. So I'll be meeting you at 6 PM ठीक है today. So please do join this. This will be very very beneficial, काफी फायदेमंद है, because revising it, we are revising it from March, April, May and all. So that would be very very beneficial for you. ठीक है? Yes. Okay, let's start with the editorial. पहले यहाँ से शुरू करते हैं. India's conglomerates are getting too big for comfort and all. So basically he's talking about the big companies in India, big corporates are functioning fine and all. That is what is being talked about. ठीक है? Nothing, not even Hindenburg research seems to stop the advance of Indian big businesses. Adani Group continues with its acquisition and all. Acquisition मतलब होता है company buy कर रहा है ना. So a big firm, if buying a small firm है ना, तो उसको कहते हैं acquisition, यानी खरीद लेना, acquire कर लेना है ना. Okay. So basically, I hope you are aware, in January the Hindenburg research report came, which led to fall in prices of Adani's stock and all. I hope you are aware of that. Okay, so after that actually, but still he's saying, the author is saying, the Adani Group continues to buy, acquisition is continuing, it's buying the smaller companies, although it is slightly slower pace, slow speed, but still it is happening. Reliance Industry has announced demerger मतलब split करना, एक कंपनी को दो हिस्सा में तोड़ देना, that's the opposite, merger का opposite हो गया, of its financial services arms to establish a new entity. So they have separated, a new entity they have formed. Okay, so that is what is being talked about. Other groups like Tata's and Aditya Empire seems to be also performing well. So it is saying that India's big businesses seems to be thriving. Thriving मतलब flourish कर रहा है ना. So according to the author, the big companies are actually working very fine. I mean, they are thriving, flourishing well. Okay. Okay, so that is what you should be knowing it. Jamia BLLB rank 1. Oh, very good, Shahnawaz, Sohail. Congratulations from my side that you have got rank 1. Anna. So, yes, we are very happy to see it. Shahnawaz, if you are from our paid classes, can you please tell us the name of the batch in which you were there and all? Okay. Yes, but this assessment is not true all of business in India. Now, it is saying, the author is saying कि ये सिर्फ बिग बिजनेसेस के लिए फाइन है, लेकिन शायद स्मॉल बिजनेसेस के लिए नहीं है. इट इज नॉट जस्ट स्मॉल एंड मीडियम स्केल फर्म्स, नॉट टू मेंशन द लार्ज मास ऑफ इनफॉर्मल एंटरप्राइज आर नॉट डूइंग वेल and are yet to recover their COVID-19 inflicted losses and all. Okay, ठीक है. So actually we are saying that COVID-19 से जो लॉस हुआ है, actually उस पर अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे स्मॉल बिजनेसेस एंड ऑल. ठीक है, that is what you should be knowing it. Okay. A former RBI deputy governor and his co-author report in a much cited paper that the share of assets in the non-financial sector owned by the big five business group has risen from 10% to 18%. So basically he is quoting that the big companies are actually thriving well, but there are issues with the smaller company and all. Okay. Shahnawaz, can you please share your phone number in the live chat so that we can contact you? आप लाइव चैट में अपना फोन नंबर एक बार डाल दो, so that we can take the screenshot and we'll contact you. Okay, yes, I'm very happy, Shahnawaz, that my The Hindu analysis worked for you. So we are very happy to see it. ठीक है, and I hope that others, बाकी लोग को भी inspiration होगा, that others would be also be getting actually good marks in the upcoming CLAT and ELET exam. Yes, आप लोग follow करते रहो, keep on following The Hindu analysis. That would be very very beneficial for you all, right? Okay, the dangers of such a rapid rise in industrial concentration have been flagged in the past across the world. The process feeds on itself by using market power, etc. तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब इतना डिटेल नहीं जाना है. So basically, he is saying, the author is saying that yes, he's talking about how the big firms in India are performing fine, but the small ones still have to have some issues. So he's talking about market favors the asset-rich people. जाहिर सी बात, जिसके पास बड़ा ज्यादा पैसा रहेगा, they have more capital, so they can invest more and then they can earn more. तो ये तो होता ही है ना. That is what is being talked about. Okay, so the question is, the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth is mentioned in where? Your options are part 3, part 4, part 4A, part 6. What is the right answer to this question? Yes, welcome Shahnawaz. I'm very happy to see that you have got benefited from my classes.
And I hope that there will be success in future for you all also, everyone who is watching the session. And Shahnawaz, can you please share your phone number on the live chat so that we can approach you, our team can approach you. आप एक बार लिख दो अपना phone number, then after you can delete it, है ना. इसका आंसर बताइए. This I taught in the paid classes when I was teaching first year, second year class में, तो ये मैं बताता हूँ. Yes, बताइए. Yes, very good, गौरी, प्रिया, चवन, धनंजय. क्या चीज का पार्ट है? पार्ट 4 में क्या मेंशन है बताओ. पार्ट किस चीज का पार्ट? Yes, yes, Gupta, you will get to know when you will be having my classes. It's a part of constitution. Yes, मैं पूरा मत लिखना चाहिए था. Is mentioned in which part of the constitution? Yes, which part of the constitution? Yes, this is the question. ठीक है. हाँ, DPSP mentioned है. Part 4 DPSP talks about it. Directive Principle of State Policy. Yes, this is the line which is mentioned. मैंने पढ़ाया भी है. That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. So that is what you should be knowing it. B is the right answer to this question. This talks about DPSP, जिसमें साफ mentioned है कि concentration of wealth होना अच्छी बात नहीं होना चाहिए. Government should try to ensure that inequality should be reduced, है ना. एक गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस कर सके. ठीक है, दैट इज व्हाट यू शुड बी knowing it. B is the right answer to this question. Okay, the difficulty is that while civil society voices can make a case for such action in the final analysis, it is the state that must implement the needed policies, and the nature of the state is not independent on the influence that the structures in society. तो इसी की बात करें, is going very much in detail and all. So just have an idea about it. Okay, yes. अब इतना डिटेल जाना नहीं. Now let's talk about India, France and all. ये काफी न्यूज में था that recently PM Modi visited actually France and all, है ना. And on the Bastille Day celebration, 14 July 1789 is famous for Bastille Day and all. French Revolution started from here. FR means French Revolution, I'm writing in short. And that is why Bastille Day is celebrated on 14 July. So India and France tri-service participation happened and all, है ना. और PM Modi is going to launch India's UPI. UPI समझते हो? UPI जैसे एग्जाम्पल है, भीम ऐप हुआ, पेटीएम हुआ, सब तो UPI का एग्जाम्पल है ना. So can you please tell me that UPI has been manufactured or has been made by which company? Answer बताइए. I'm waiting for the answers. What is the right answer to this question? ये भी important है कि UPI कौन manufacture करता है. हाँ, he got in fact Legion of Honor award also. Legion of Honor is France highest civilian award. Yes. जैसे आप समझ लो similar to भारत रत्न in India, जिस तरह भारत रत्न होता है इंडिया में highest civilian award, उसी तरह फ्रांस में Legion of Honor होता है. Yes, it was also in the news. Yes. So that is what is being talked about. They talk about strategic roadmap, Horizon 2047. देखो 1947 we got independence, तो 100 ऐड करोगे तो 2047 हो जाएगा. उसी को हम लोग Horizon 2047 कह रहे हैं. ठीक है. So another roadmap was released on how to cooperate further in the Indo-Pacific region, which includes military and naval exchange and all. ठीक है. Where we are going to buy perhaps more 26 more Rafael Jets and all. Yes, very good, very good. UPI has been made by NPCI, National Payment Corporation of India. Yes, Gauri, Priya, Chavan, Zoya Khan, Dhananjay, you all are right. And it is under RBI. थोड़ा सा आप NPCI पढ़ लीजिएगा, because yes, NPCI do comes in the news. UPI वगैरह अक्सर न्यूज में रहता है, आपको पता होना चाहिए. Yes, okay. Now since we are talking about buying 26 more Rafael Jets and all, there's a question for you. Rafael Jet is made by which company? Your options are Rafael Advanced Defense System, Dassault Aviation, Lockheed Martin, Boeing. Your time starts now. बताइए. Rafael Jet जो है, जो आपके सामने फोटो ही बना हुआ है, ये कौन सी कंपनी बनाती है इसको? Waiting for the answers. Yes, Gauri, very good. Priya Chavan. Yes, Dhananjay, Sani Ansari, you all are right. देखो आपको एक चीज बताना चाहिए, जोया खान. यस, ये वाला जो है ना, ये भी एक है. देखो इसमें पहले ख्याल रखना, ये स्पेलिंग और दीज स्पेलिंग आर डिफरेंट. ठीक है. दिस इज इजराइल्स डिफेंस कंपनी. जैसे इंडिया में DRDO होता है ना, सिमिलर टू दैट इजराइल का एक डिफेंस कंपनी है, मैन्युफैक्चर्स डिफेंस इक्विपमेंट एंड ऑल. दैट्स कॉल्ड एज राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम. और ये डसॉल्ट एविएशन जो है फ्रांस की है, प्राइवेट कंपनी which actually manufactures this Rafael jet. स्पेलिंग दोनों अलग अलग है, and these two are from Lockheed Martin to USA and all, आपको पता होगा. Yes.
हाँ, yes, very good. राफेल जो है इजराइल का, yes, गौरी, very good. हाँ. So the right answer is option B. 2 is the right answer to this question. That is what is being talked about. देखो अभी एक और चीज की बात हुई है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और साफरान जो है, साफरान फ्रांस के हेलीकॉप्टर इंजन से मिलकर के इंजन बनाएंगे, एग्रीमेंट हैव बीन साइंड एंड ऑल, है ना. So that is what is being talked about. France India strategic partnership is built on a respect for each other's strategic autonomy, है ना. तो इसी सब की बात हो रही है. France has taken a leading role in Russia Ukraine war and all, ठीक है. So just have an idea about it. अब देखो कुछ क्वेश्चंस, चूंकि जब 2020 में राफेल आया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. So this is a question for you. Can you please answer it? Which of the following indigenous organization, indigenous मतलब made in India, is responsible for design, assembly and fabrication of combat aircrafts? हवाई जहाज बनाने में कौन सी कंपनी का रोल होता है, बताइए. तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए. देखो, इसरो इज कंसर्न अबाउट स्पेस क्राफ्ट, स्पेस रिसर्च से रिलेटेड है, ठीक है. तो ये स्पेस की बात हो रही है, तो जेट्स वगैरह तो नहीं बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी कम लगती है, ठीक है. कुछ लोग ए या बी में कंफ्यूज कर सकते थे, आई एग्री, कि डीआरडीओ भी हो सकता है बनाता हो, बिकॉज डीआरडीओ इज फेमस फॉर मेकिंग टैंक्स, देन मिसाइल्स एंड ऑल. बट हियर एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफिकली HAL है, हाल, है ना. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो यू कुड हैव इजीली आंसर्ड इट. इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग एडिटोरियल्स, यू कुड हैव इजीली आंसर्ड इट. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. और अभी मैंने बताया भी कि हाल, हाँ, हाल का जैसे तेजस है, वेरी गुड, यस गौरी, वेरी गुड. हाँ, तो तेजस फ्लाइट बहुत फेमस है, हाल के द्वारा बनाया गया है ना. हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में. So you should be knowing these types of questions as well. Okay, the Ukraine counter-offensive, a reality check. So he's a former foreign secretary and all. He is writing about it after a few months of speculation as to when and where the Ukraine counter-offensive against Russia would begin. Ukraine President Vladimir Zelensky finally stated in June that offensive had begun and all. तो अब इसमें इतना डिटेल नहीं जाना है. हर कुछ दिन पर कुछ ना कुछ नया इवेंट होता है. Every few days we are having a new event in Russia-Ukraine war. You're not supposed to remember each and everything. Just have a basic idea कि क्या क्या चीजें हो रही है. Where is Sea of Azov? Where is Crimea? Why Crimea was in the news? जैसे आपको पता होगा, here is Russia, this is Ukraine, this is Ukraine, this is Azov Sea, आपको पता होगा, है ना. And this is the Crimea, which was captured by Russia in 2014, earlier a part of Ukraine. ये वाला Black Sea है, यही सब पता होना चाहिए, ठीक है. Then yes, Ukraine has assembled large quantities of NATO supplied weapon. Although Ukraine is not a member of NATO, but it's have got a lot of weapons from NATO countries and all, है ना. आपको पता होगा, है ना. Because yes, now Ukraine cannot fight the war alone, and perhaps the ammunition would have been gone, I mean complete. हाँ, so that is what is being talked about, है ना. तो इसी से की बात हो रही है. फिर then again talking about Wagner mercenary group की बात हो रही है. I hope you are aware Wagner is actually a private militia or private organization of Russia which was supporting Russian government against actually Ukraine. I hope you are aware the head, Mr. Yevgeny Prigozhin, he's the head of Wagner group. He is called as Putin's chef. But recently we have seen some sort of revolt, है ना, and that was actually pacified and all. बाद में जाके बातचीत करके खत्म किया गया and all. That is what is being talked about. फिर बाखमुत कहाँ पर है? These are things. Kharkiv and Kherson actually Ukraine recaptured it, ठीक है. Then there is a city called as Mariupol. पहले आप इसका आंसर बताओ, then I'll be explaining. It is a port city. अभी ये recently किसी एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन. I think UPSC का CDS एग्जाम होता है, शायद इसमें पूछे थे. Your options are Black Sea, Azov Sea, Caspian Sea, Mediterranean Sea. What is the right answer? ये सवाल actually Mariupol कुछ दिन पहले तक काफी न्यूज में था. That is why you should be knowing it. It is the port city on Black Sea, Azov Sea, Caspian or Mediterranean. What is the right answer? Yes, Gauri Priya Chavan, very good. Azov Sea में है. B is the right answer to this question. Yes. देखो ये दिखा रहे हैं ना, देखो मैं दिखाता हूँ. This is Ukraine. इतना बड़ा सा अभी वहाँ पे यूक्रेन है, ठीक है. तो ये वाला I mean some portions were captured. So Kharkiv capture कर लिया था रशिया ने, but Ukraine has taken back. फिर खेरसोन को भी वापस ले लिया, ठीक है. मारियोपोल है, यहाँ पर है बाखमुत, ये भी काफी न्यूज में भी चल रहा है. The fighting is going on in Bakhmut between Russia and Ukraine and all, ठीक है. तो ऐसा कुछ है, आप देख लो. Kharkiv and Kherson, now it is back to the Ukraine, वापस आ गया, ठीक है. पहले ये सब रीजन पूरा कैप्चर कर लिया था कुछ इस तरह. So now they have taken it back, okay. लेकिन अभी भी ये जो रीजन जैसे मारियोपोल है, it is actually still ये वाला Azov Sea है, ठीक है. So still actually Mariupol is under Russia and all. Donetsk यहाँ पर है ना. मेन जो लड़ाई जो रीजन था वही था, डोनेस्क एंड लुहांस्क were the two reasons. I hope you are aware, है ना.
जिसको मिला के डॉनबास रीजन कहते हैं. सो आफ्टर द क्लास इज ओवर, रीड अबाउट डॉनबास रीजन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ठीक है, यस. फिर यहाँ पर एक रिवर भी है ना, नीपर रिवर इज देयर, जो खार की ये नीपर रिवर, यहाँ पे कीव इसका कैपिटल है ना, कीव इज द कैपिटल, दिस इज ऑन नीपर रिवर, ये सब पता होना चाहिए. फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट. इट इज वेरी मच इन द न्यूज. देयर आर फियर्स ऑफ I mean there are fears that maybe perhaps Chernobyl type incident might happen if the bomb is dropped here and all. ठीक है, कुछ और फेमस सिटी जैसे ओडेसा है, ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर है, ब्लैक सी पर एंड ऑल. सो दीज आर द फेमस फैक्ट्स यू मस्ट बी knowing about it. The huge leak of Pentagon files got to know that the presence of American, British and NATO fighters in Ukraine. ठीक है, so these are being things talked about. तो इसी सब की बात हो रही है. देखो क्या है, जब जंग होगी तो बहुत सारे हर कुछ दिन पे कुछ ना कुछ न्यूज आएगा. उतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है. सो बट जस्ट हैव अ बेसिक आइडिया. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन. चलिए बताओ तो, देखते हैं हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर इट. देखो मैं मानता हूं कि आप ए और सी में कंफ्यूज कर सकते हो, बट इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर एटलीस्ट यू कुड हैव एलिमिनेटेड इट. ये वाला स्पेलिंग नहीं है, ये वाला स्पेलिंग है ना. ये व्लादिमीर पुतिन में जब लिखते हैं तब ये वाला स्पेलिंग चलता है, तो ये वाला गलत. इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर तो आप बी और डी एलिमिनेट कर रहे थे. इसमें आपका 50% चांस था. आई नो कि थोड़ा सा मुश्किल था ये बताना, बट स्टिल द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बारे में. ठीक है, गो एंड रीड इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी ऑफ यूक्रेन. ये क्वेश्चन आया था. देखो रूबल जो है करेंसी रशिया की है, हो सकता है पूछ ले. ठीक है, यूक्रेन की करेंसी थी, मैंने बताया कई बार, आई हैव डिस्कस्ड इट. द राइट आंसर इज हरिविनिया, है ना. डी इज द राइट आंसर. फिर एक और सवाल पूछा था, द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन वाज फॉर्मरली व्हाट, वेदर फोरकास्टर, कॉमेडियन, नेवी ऑफिसर, टीवी न्यूज रीडर. अब देखो इसको भी बहुत आसानी से कर लेते हैं. देखो मैं बताता हूं, व्हेनेवर थिंग्स आर वेरी वेरी मच इन द न्यूज, रीड एट लीस्ट फर्स्ट पैरा ऑफ विकिपीडिया. कोई भी आदमी या कोई भी चीज बहुत ज्यादा न्यूज में, तो उनका फर्स्ट पैरा विकिपीडिया का जरूर पढ़ लेना. जैसे वैगनर ग्रुप के चीफ न्यूज में, तो उनका फर्स्ट सेकंड पैरा थोड़ा सा पढ़ लेना. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव रेड अबाउट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की लास्ट ईयर, इट वाज वेरी मच इन द न्यूज. तो अगर आपने जैसे ही फर्स्ट पैरा पढ़ा होता है ना, फर्स्ट 2 पैरा, तो आपको पता चल जाता अच्छा इनका नाम ये है, व्लादिमीर ओ ज़ेलेंस्की है, कॉमेडियन पहले रह चुके हैं, एक्टर भी थे एंड ऑल. ठीक है, सो ही बिलोंग्स टू जेविश फैमिली एंड ऑल. हो सकता है ये पूछ ले. So that is why I'm saying कोई भी चीज अगर न्यूज में हो तो विकिपीडिया पे जाके फर्स्ट एंड सेकंड पैरा प्लीज गो एंड रीड इट. दैट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, ओके, यस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. फ्लड फ्यूड, स्टेट्स मस्ट कोऑर्डिनेट टू इवॉल्व अ जॉइंट स्ट्रेटजी टू कॉम्बैट फ्लड्स. ठीक है, आई होप यू आर अवेयर, इफ यू हैव सीन द नॉर्थ इंडिया, I mean things are not very fine as far as monsoon and these are things are concerned. काफी ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पे inundation happen. Inundation मतलब वही flooding happened, water blocking happened in Delhi at many places, and we have heard news as in Himachal Pradesh also, some places in Chandigarh are also flooded with actually inundation happened. ये सब आपने देखा होगा, ये सब images, है ना. Okay, you should be knowing about that. ठीक है, okay. In terminology of IMD, Indian Meteorological Department, I hope you are aware. Delhi government receive excess and large excess rainfall. काफी ज्यादा बारिश हुई. ठीक है, इतना mm होता है. इसको मेजर करने का होता है, रेनफॉल मेजर करने का तरीका होता है ये. ठीक है, ओके. सो रेड फोर्ट्स के आसपास, सुप्रीम कोर्ट के आसपास आल्सो फ्लडेड, इट गॉट फ्लडेड एंड ऑल, है ना. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो किस रोड पे, कोई बता सकता है? देयर इज अ रोड इन दिल्ली ऑन व्हिच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रोड? ऐसी एक लाइट क्वेश्चन है, स्पेशली माय होम टाउन. ओके, दिस इज योर होम टाउन, हिमाचल. हाँ, यस, हिमाचल में मैंने बहुत सारे जगह न्यूज देखा कि थैंक्स, आई मीन अ लॉट ऑफ रेनफॉल्स हैड हैपेंड एंड ऑल. कोई बता सकता है एनीवन ऑन व्हिच रोड यू विल फाइंड सुप्रीम कोर्ट? खैर, so these are the things, the increased probability of spells of extreme rain given warming trends in the Arctic as well as Arabian Sea means there will be several monsoon instances of flooding in the future. अब बता रहे कि हाँ शायद फ्यूचर में और हो, इसलिए कि अभी भी मानसून बाकी है ना. I mean it's not कि मानसून is over, so maybe we can have further rainfall and all. Yes, you should be knowing it. Rose Avenue नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज ऑन तिलक रोड, तिलक मार्ग है ना, रोड का जो नाम है तिलक मार्ग कहते हैं. ठीक है, ओके, यस,
हो सकता है एवेन्यू का नाम रोज एवेन्यू, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट रोड इज तिलक मार्ग वेयर यू विल फाइंड द एड्रेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, ओके ओके. लेट्स मूव ऑन टू ओपिनियन पेज. आर्किटेक्ट बियॉन्ड द न्यू पार्लियामेंट. अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू पार्लियामेंट? योर ऑप्शंस आर राम वी सूतर, बिमल पटेल, बीवी जोशी, हफीज कंट्रैक्टर. अच्छा, एक दो और होमवर्क है. आई होप यू आर अवेयर ऑन फ्राइडे चंद्रयान वाज लॉन्च. यस, ठीक है. तो मे बी आज मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है, बट कुछ चीजें हैं आप पढ़ के आना. टुमारो आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग चंद्रयान. ठीक है, क्या क्या पूछूंगा मैं बता दे रहा हूं. सो आई एम गिविंग अ होमवर्क. रॉकेट का नाम क्या है? गो एंड फाइंड आउट. ठीक है. देन लैंडर रोवर का नाम क्या है? प्रीवियस मिशन जो था चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2 का अचीवमेंट क्या है, ये पढ़ के आइएगा. ठीक है. एंड चंद्रयान 3 वाज लॉन्च फ्रॉम विच स्पेस सेंटर, विच लोकेशन, कहां से लॉन्च किया गया था. सो दीज आर द क्वेश्चंस आई विल बी आस्किंग. ठीक है. सो व्हेन चंद्रयान 2 वाज लॉन्च, हु वाज द इसरो चेयरमैन? एंड व्हेन चंद्रयान 3 इज बीइंग लॉन्च, हु इज द इसरो चेयरमैन? ये सब होमवर्क है. Questions from here will be asking most likely tomorrow. ठीक है, okay. Yes, who is the architect of the new parliament? Good. Dhananjay, Sanya, Nitika, Zoya, Rashmikant, Priya, Namra. Yes, the right answer is Mr. Bimal Patel. Ram V. Sudhar is actually the architect of Sardar Patel's statue. Sardar Patel's statue. ठीक है, ये याद रखिएगा. बीवी जोशी का अभी recently, I think last year, I guess he died also. Death हो गया इनका. So the right answer is B. Bimal Patel is the right answer to this question. So he's talking about architecture and all. इसमें आप उतना research नहीं करना, वो detail नहीं जाना. अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हो, है ना, the history about architecture and all. Just go and read it. E-rickshaw to two-wheelers, the shift in electric vehicles. अच्छा, एक homework question है. Please tell me. हाँ, ये जो रामवी सूतर है, उन्होंने Statue of Unity का डिजाइन किया. Yes, Statue of Unity, which is actually a statue of सरदार पटेल जी. ठीक है, tallest statue of the world, है ना. यहाँ इसका आंसर बी है इस क्वेश्चन का. राम वी सूतर इज द आर्किटेक्ट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. यस धनंजय, करेक्ट. हाँ, एक होमवर्क, एक क्वेश्चन है, बताइए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए देयर इज अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्कीम? बताइए तो. ओके, आई होप यू आर अवेयर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखो कितना तेजी से फिस्कल ईयर 2015 में इतना था, 2024 में इतना हो गया. अच्छा, ये सब टर्म मैंने पढ़ाया है. आई हैव टॉट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? This is representing which fiscal year? Can you please tell me? I have taught in the paid classes. कौन सा fiscal year को ये represent करता है? FY24. बताओ तो. हाँ, so cumulative number of electric vehicles increase हुआ है, तो इस तरह से इतना तेजी से electric vehicles के numbers बढ़े हैं, है ना? Because yes, of course, electric vehicles के बहुत सारे फायदे हैं कि pollution control होगा, है ना? And yes, now since जैसे पेट्रोल है, डीजल है, these are fossil fuels, उसके limitations हैं. एक certain level के बाद these petrols and diesels will no more be there, है ना? So that is why we have to move towards alternative and all. दीनदयाल ई रिक्शा परियोजना, हाँ ठीक है. एक बहुत फेमस जो है ओवरऑल गवर्नमेंट के लिए जो है वो है फेम इंडिया स्कीम. फेम इंडिया स्कीम, ये भी मैंने पढ़ाया है पेड क्लासेस में. ठीक है, सो गो एंड रीड अबाउट दैट. ठीक है, ओके. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ गाइस. एवरीवन एटलीस्ट 25 प्लस लाइक्स ले जाओ. एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन. ठीक है, तो इस शेयर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो आसाम सबसे आगे है, त्रिपुरा, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स एंड ऑल. ओके, यस, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब इतना नंबर्स नहीं याद रखना है कि पहले 2400 था 10 साल पहले, नाउ इट हैज बिकम 27.4 लाख. सो यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर द नंबर्स, है ना. इतना नंबर रखना पॉसिबल भी नहीं है, बट हैव अ बेसिक आइडिया कि अच्छा चीजें बढ़ी हैं, नंबर्स में परसेंटेज बढ़ा है और यस. FY24 का कोई बताया नहीं किसी ने. यस, सानिया अंसारी हैज आंसर्ड इट, मान्या चावला आल्सो. यस, FY24 का फिस्कल ईयर का मतलब हुआ फिस्कल ईयर 2023-24. यस, which starts from 1st April 2023 and ends in 31st March 2024. ये मैंने डिटेल पढ़ाया है इकोनॉमिक्स में. जब भी मैं इकोनॉमिक्स शुरू करता हूँ, whenever I teach economics in the part 1, the first section I teach this, कि फिस्कल ईयर कैसे पहचाना जाता है. यस, पूरा डेज मंथ सब मैंने बताया एक एक करके. क्वार्टर्स भी मैंने पढ़ाया है, Q1, Q2, Q3, Q4, how to read, how to understand these concepts. Yes, you should be knowing it. Yes. Okay, next here, 2 killed in Manipur in fresh round of violence. I hope you are aware when things are not fine in Manipur. Here is the state of Manipur. The capital is Imphal.
and there have been for the past few months we have seen some sort of violence and all. So that is what is being mentioned here. So just have an idea about that. Okay. A question, I first answer this question. Dash is the first woman to become the director of an IIT, Indian Institute of Technology. Star mark kar lena. Your options are Minnie Thomas, Miss Minnie Thomas, Miss 𝗟𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗹, Miss 𝗟𝗃 𝗥𝗲𝗴𝗵, Miss 𝗤𝗂𝗙𝗴𝗏. What is the right answer to this question? Director, first woman director of IIT. पता होना चाहिए थोड़ा बहुत आपको ये सब चीजें, है ना? Yes, गौरी, you are right. 𝗟𝗲𝗴𝗋 प्रिया चवन, हाँ. Okay, the right answer is option B. 𝗟𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗪 is the right answer to this question. ठीक है. So you can see it here. ठीक है. While the first IIT was set up at Kharagpur in 1951, है ना? So Miss 𝗥𝗲𝗴𝗪 director in charge of IIT Zanzibar. देखो क्या है कि IIT मद्रास जो है ना, there's a very famous old IIT. यहाँ पे चेन्नई है ना? Yeah, that's IIT Madras. You will find it here. So they are setting up its branch in Tanzania. Tanzania में एक जगह Zanzibar. ठीक है. So in that, actually the head would be Miss 𝗟𝗲 𝗥𝗲𝗴𝗪, है ना? First woman to become the director of IIT, है ना? So that is what she is talking about. That is what, है ना? So IIT Zanzibar director in charge she will be. Okay, so just have an idea. थोड़ा सा news पता होना चाहिए ना. Supreme Court Collegium quite transparency is driving change and all. ठीक है. So I hope you are aware. Supreme Court Collegium के बारे में पढ़ लीजिएगा कि how many judges are there in appointment of Supreme Court judge and High Court judge. कितने कितने मेंबर होते हैं कॉलेजियम में. Go and find out. हाँ, IIT दिल्ली का ब्रांच अबू धाबी में खुलने जा रहा है. Yes, धनंजय, very good. You are aware of that, है ना? That's also in the news, है ना? तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा. सेकंड जजेस केस पढ़ लीजिएगा. It do comes in the news a lot of times, है ना? और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है उसमें कितने मेंबर्स हैं फॉर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटमेंट एंड फॉर हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट, कितने मेंबर्स होते हैं? गो एंड फाइंड आउट. ठीक है. सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू. Russia has sufficient stockpile of cluster bomb. Actually USA ने has decided to give Ukraine cluster bombs जो कि काफी dangerous माना जाता है, deadly and all. So Russia ने कहा है कि they also have the cluster bombs and all. So that is why it was in the news. So you should be knowing something about these things. मैंने cluster bomb already discuss किया है. Yes, 5-member collegium होते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, right? So this is all about today's class, guys. Please download the app. Go to CLAT section. I will be meeting you at 6 PM. याद रखिएगा 6 बजे आज मुलाकात होगी. Where I will be doing revision of the Hindu newspaper analysis and all. ठीक है. So you should be knowing about it. Okay. So thank you everyone. Thanks for watching. Please press the like button. Share this video. I will be meeting you at 6 PM. Thanks for watching. Have a nice day.